भी और उनको फिर वो कहती हैं हैंड्स फ्री वीकली इंटेंशन बिकम फुली सबमर्ज इन पैशंस। और उन्होंने एक बात दरमियान में ये भी बहुत अच्छी की है कि अगर आपको कभी डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे जाना पड़ जाए या आपको कभी किसी ऐसी अपॉइंटमेंट पे जाना पड़ जाए या कैसी आप ऐसी जगह पे स्टक हो जाएं जहाँ पे आपको पता हो कि आपको किसी का इंतज़ार करना, लंबी लाइन है, तो यूजुअली हमारे पास फ़ोन होता है, हम क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन पे बिजी हो जाते हैं। अगर हम हैंड्स फ्री रेवोल्यूशन को अपना रहे हैं और अपने अंदर वो चेंज ला रहे हैं, वो रेवोल्यूशनरी चेंज ला रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि हमें कोई रोक नहीं है कि हम अपना फ़ोन पकड़ सकें, लेकिन हम इंटेंशनली अपने फ़ोन को नहीं पकड़ेंगे बल्कि बच्चों के साथ बातें करेंगे, क्रेयॉन्स के साथ खेलेंगे, कोई कहानी लेंगे, कोई स्टोरी बुक पढ़ लेंगे, उनकी कोई बात सुन लेंगे, कोई छोटी सी पजल या गेम उनके साथ खेल लेंगे, टिक टैक टोई खेल लेंगे, ठीक है। अपने पर्स में कोई ऐसी चीज़ रखें, तो वो बेसिकली आप इंटेंशनली डिलिबरेटली चूज़ कर रहे हैं किसको, अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अपने घर वालों को निस्बतन अपने फ़ोन के। अच्छा, ये एक छोटी सी पोम है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये पढ़ लूँ। इससे थोड़ी सी लंबी है, पता नहीं, आई डोंट नो इफ आई शुड रीड और नॉट। ओके, आई विल जस्ट स्किप इट देन। उनकी रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं कुछ। रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस ये हैं, when you are in a situation where you have to wait, stoplight, restaurant, or a sporting event, do you reach out for your device? What factors might you consider before looking at the phone to help you choose the human connection instead? What small moments in the daily routine are you using to engage in human connection instead of digital distraction? अच्छा, तो समी कहती हैं yes, अच्छा मैं करती हूँ। और फिर एक आखिरी क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम इन द पास्ट वीक व्हेन यू चोज टू लेट गो ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन एंड ग्रास्प द मोमेंट दैट इट मैटर्ड। बेसिकली अपना वो करें मुहासबा कि मैंने कहाँ पे डिलिबरेटली, कॉन्शियसली, इंटेंशनली, और हमारा दीन कितना खूबसूरत है, वो ऑलरेडी इंटेंशन की बात करता है कि हर अमल का दारो मदार आपकी इन नीयत पर है। तो नीयत तो रखना शुरू करें और फिर इंटेंशनली डिलिबरेटली वो एक्शंस करने शुरू करें और राइट डाउन करें। अच्छा, कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा देर पा या अमल में तब रहती है जब ना आप उसको लिखें, क्योंकि जब हम वो लिख रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों के बाद जब हम वापस जाके उस चीज़ को देखते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हम में वाकई में चेंज आया है कि नहीं आया है, या वाह उस वक्त मेरी सोच ये थी। मज़ा आता है। डिलिबरेटनेस पे कहती हैं, you chose me. It used to be what you greeted first thing in the morning. Now you greet me. So she is talking as if her child is speaking to her. ठीक है? तो पहले, okay. I will just free flow talk so that you can take your own interpretation. I will start again. Deliberateness. You chose me. It used to be what you greeted first thing in the morning. Now you greet me. You said good morning, and how did you sleep? Your hands, no longer clinging to the device, are available to hug me, help me pour my cereal, and ruffle my hair. Thank you for greeting me. It used to be what you checked before bedtime. Now you check me. You make sure the covers are snug, the pages are turned, and the monsters are shooed away. Your voice and your presence, no longer given to someone on a screen, remains on my skin as I drift off to sleep. Thank you for checking on me. It used to be that you talked for hours on end. Now you talk to me. You ask me about my dreams, my drawings, my latest jokes, and darkest fears. With your eyes you listen, really listen. No longer summoned by the beeps and rings. Thank you for talking to me. It used to be that you held in your hand as you traveled room to room. Now you hold me. You hold me in your gaze, wrap me in your arms, and take my hand in yours. Your hands are free, often leaving the device behind to cover me with love. Thank you for holding me. Chapter number 4. I hope कि मैंने हर चैप्टर के एंड में ना कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे. I hope कि वो क्वेश्चंस आपने नोट किए हों. It's important because if you're going to complete this book, I would highly suggest that we do write those questions. Okay, recognize the gift of today. Presentness. पहले उन्होंने कहा awareness.
फिर उन्होंने क्या कहा? Connectedness. फिर उन्होंने क्या कहा? Deliberateness. फिर उन्होंने क्या कहा? Presentness. आम जुबान में आप बोलोगे सारे एक ही तो हैं, लेकिन एक नहीं है. एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मुझे पता है कि माशाल्लाह आप सारे बहुत स्मार्ट हैं. ओके, वन डे एट अ टाइम. अब ये आयरा स्कॉट टेलर का उन्होंने कोट लिखा है. वन डे एट अ टाइम, दिस इज इनफ. Do not look back and grieve over the past, for it is gone, and do not be troubled about the future, for it is not yet to come. Live in the present and make it so beautiful, it would be worth remembering. कोई बहुत बड़ी profound बात नहीं है. ये बात तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताई है. ये बात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बार बार कही है कि जो गुजर गया उसकी तौबा मग़फ़िरत मांग लो. जो आने वाला है उसके लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं. जो प्रेजेंट है उसमें हम शुक्र, ज़िक्र, सजदा और अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश कर सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट बेहतरीन हो. राइट? तो बस यही बात है प्रेजेंटनेस की. कंसिडर योर सेल्फ गिफ्टेड. अगेन वो यही कहती हैं कि हर चीज़ को अपनी नेमत की तरह लो. हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करो. इस चीज़ को समझो कि अगर तुम्हारे पास ये लम्हा है तो ये तुम्हारे रब की नेमत है और इससे इंतहाई खूबसूरती के साथ गुजारो. वो कहती हैं कि जब मैंने अपना टाइम अपने बच्चों को देना शुरू किया तो मेरे बच्चों ने भी मुझसे पहले से ज़्यादा मोहब्बत करनी शुरू कर दी. जब मैंने अपना टाइम अपने शौहर को देना शुरू किया तो मेरे शौहर ने भी मुझे अपना टाइम देना शुरू किया. मतलब हर नेकी को खींचती है. राइट? तो वो कहती हैं कि even 60 seconds of 60 seconds क्या होते हैं पता भी नहीं चलता. right? Even 60 seconds of undivided attention can have a positive impact on your behavior and atmosphere in your home. Take these intentional pauses throughout the day and they will not only strengthen your relationship but also allow time to become a memory. कहती हैं कि मेरे फैंस या मतलब कि मैं मुख्तलिफ जगहों पे लिखती हूँ तो मुझे लेटर्स वगैरह आते रहते हैं लोगों के. तो मुझे एक दिन एक लेटर आया और उस लेटर की ख़ास बात ये थी कि जब मैं वो पढ़ रही थी तो उसने लिखा हुआ था, My sister would have loved you. My sister would have loved you, not my sister loves you. इसका मतलब है कि वो उसने अपनी बहन के बारे में लिखा था कि अगर मेरी बहन तुमसे मिलती तो तुम्हें बहुत पसंद करती. यानी कि बहन फौत हो चुकी है, उसके बच्चे यंग थे और वो खातून जो कोई भी थी वो बहुत जल्दी अपने बच्चों से अलग हो गई थी, फौत हो गई थी. तो इस चीज़ ने उनको झंझोड़ा कि मतलब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है. और ही अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान एतकाद है कि हर लम्हे को मतलब अपनी मौत को याद रखो और अपने मौत के सफ़र को याद रखो और कोशिश करो कि बेहतर ज़िंदगी गुजार सको. तो वो कहती हैं कि Let me put it in this way. The sit-down dinner you shared with your family last night and the night before and the night before that, that is now your past. The silly wake-up routine you've had with your child every single morning since he was small, whether you felt like it or not, this is now your past. The trip to the farmer's market. We can't see the future. We can't predict how all of the special nightly tuck-in family traditions are going to add up, or can we? Recently, I felt that I was in a glimpse of my future, and this awareness profoundly changed me the way I regard my everyday routines. The glimpse came courtesy of the blog reader, the children much older than my own. Her story beautifully illustrates how minutes spent actively participating in a daily routine helped. अच्छा, तो ये किसी और ने भी उनको लिखा है. वो कहती हैं कि मुझे किसी और खातून का जो लेटर आया, उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, तो वो उन्होंने मुझे ये लिखा. Long ago, my husband and I chose to live 50 minutes away from the city in which we work. This meant 110 minutes in the car with my daughter every single day throughout her school years. It would have been easy for me to look at a tiresome and difficult and drive to school and to the church and all the civilization for that matter as dreaded inconvenience. कि उफ गाड़ी में इतनी देर रोज़ 110 मिनट गाड़ी में गुजारना आसान नहीं है, और स्पेशली अगर ट्रैफिक स्टॉप हो जाए तो may Allah help us. कहती हैं मैं उसको शिकायत करके शिकवा करके रो धो के वो टाइम भी गुजार सकती थी. मैं उसको अपनी ईमेल्स और मैसेजेस करते हुए भी वो टाइम गुजार सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. Instead, I viewed the daily drive as my opportunity to connect and understand my daughter. While in the confines of my vehicle, she is a captive audience for me and I am for her. It is there
that we share special talks, have meaningful connections, private jokes, and heart-to-heart chats. Each time we write together, I hear the important things of her day. आखिर में वो कहती हैं, the time you spend with your family around the dinner table adds up. और ये सारी बातों से हम वाकिफ़ हैं, ये बहुत नई बातें नहीं हैं, सिर्फ हल्के फुल्के से रिमाइंडर हैं. वो कहती हैं कि speak words of love. हमारी लैंग्वेज हमारे जहन को बदलती है. नरम लैंग्वेज, मोहब्बत का इजहार, और बार बार मोहब्बत का इजहार किसी बच्चे को बिगाड़ता नहीं है. बाउंड्रीज तो अपनी जगह होती हैं, लेकिन छोटे बच्चों को स्पेशली शुरू से ये कॉन्फिडेंस देना कि हमें आपसे प्यार है, आप हमारे लिए अजीज़ हो, हम आपसे मोहब्बत करते हैं. ठीक है, ये important होता है. ठीक है, when spoken and repeated every day, she writes, these messages begin to take up the residence in a little one's souls. He or she begins to believe that they are worthy. They begin to carry these messages with them. They learn how to see others. They learn how to love themselves and others. ये तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुना है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करो, और ये वो अपने रिश्तेदारों अहल वयाल के बारे में नहीं कह रहे थे, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ चल रहे थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था. और फेमस हदीस है, तो बाकी सारी बात को मैं पैराफ्रेज नहीं करूँगी, लेकिन एंड में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर आप किसी से मोहब्बत करो तो उसका हक है कि वो जाने कि आप उससे मोहब्बत करते हो, चाहे वो मतलब कि आपके पेरेंट्स हों, आपके बच्चे हों, आपका स्पाउस हो, तो हमें बताना चाहिए अपनी बातों से. अच्छा, 5 languages of love भी करेंगे कभी, 5 languages of love of your children. I think I should do that because that's a very good book. जो इनिशियल बुक आई थी ना, वो 5 languages of love थी. It was just between a man and a woman. आपके स्पाउस के साथ आपके relationships कैसे होने चाहिए. लेकिन this one, 5 languages of love with your children, is also really good. Inshallah, I will remember to do this to bring this book into the group. एंड में अगेन वो अपनी पोएम बोलती हैं, प्रेजेंट रहो. अच्छा, रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस. डू यू पुट ऑफ spending time with loved ones or delay doing things you enjoy until certain duties are complete so that you have more time? Does that ideal moment ever arrive? What daily or weekly rituals are special to your family? How do you feel connected to the sacred parts of your life? What action will you take this week to protect these rituals or begin new ones? Next chapter, chapter number 5, it talks about pause, serenity. कि हर लम्हे को सोच समझ के गुजारें. पूरे चैप्टर का अगर मैं आपको जिस्ट दे दूं तो वो यही है कि जल्दी मत करें, हर चीज़ को जल्दी निपटाने की कोशिश मत करें. Have a do nothing moment. Cuddle together, take a walk, place your ear on the chest of a loved one and listen to his or her heartbeat. Sit outside and observe nature. Watch your child play. उन्होंने पूछा, कहती हैं कि पॉज के टॉपिक पे वो कहती हैं कि मैंने अपने आप से एक दिन पूछा कि what is the worst thing that could happen if I'm late? This helped me acknowledge that arriving safely a few minutes late was much better than yelling at my children or getting a speeding ticket. ये तो बहुत ही अहम है, स्पेशली हम माओं के लिए जो ड्राइव करती हैं और जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह अपने बच्चे को ड्रॉप करना होता है या पिक करना होता है और हम एंड टाइम पे निकल रहे होते हैं, चीखम चिंगार लगी होती है. कोई बात नहीं अगर लेट हो गए तो, unless until it's a flight, then you cannot be late, then you missed the flight. But apart from that, really, so अगेन बात पूरी पंक्चुअलिटी पर आ जाती है और पहले से प्रिपरेशन पर आ जाती है, वो सारी चीज़ें हैं. लेकिन लाइफ है, अगर आप आदतन लेट नहीं हो रहे लेकिन किसी वजह से लेट हो गए हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं है. I told myself that being off a schedule is a blessing, that perhaps there is an accident I'm avoiding right now because I'm running late. This helped me slow down and feel comfortable with the fact that maybe the little late was exactly what I was supposed to be. Subhanallah, Allahu Akbar. कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा दीन क्या है वो हदीस के मोमिन की हर बात में खैर है. अगर उसे खुशी पहुँचे तो भी वो खुश हो कि अल्हम्दुलिल्लाह
مجھے آسانی, آسائش اور خوشی ملی, اور اگر مجھے تکلیف پہنچے تو بھی الحمدللہ کہ شاید میں اس سے بڑی تکلیف سے بچ گیا. ایگزیکٹلی یہی بات اس خاتون نے لکھی ہے کہ میں اگر لیٹ ہو ہی گئی ہوں کہیں پہ تو میں یہ بھی تو سوچ سکتی ہوں کہ اگر میں جلدی میں جا رہی ہوتی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, میرا کوئی زیادہ بڑا نقصان ہو جاتا. چھوٹے چھوٹے نقصانوں کو شکر کے طور پہ لے لیا کریں کہ پتہ نہیں شاید کوئی بڑی نقصان, کوئی بڑا نقصان, کوئی بڑی بلا ٹل گئی. I love it because یہ ہم بکس پڑھتے ہیں. ایک تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ مجھے ایٹ لیسٹ, میں اپنی بات کروں گی, مجھے نہیں پتا آپ کا, لیکن مجھے زیادہ اردو آتھرز کا پتہ نہیں ہے. میری اردو بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, مطلب کہ بہت سارے مشکل الفاظ مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آتے. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں نے اردو سیکھی نہیں ہے, میں نے 12th گریڈ تک اردو پڑھی ہے. میں نے سیاق و سباق اور سمریز اور شعر و شاعری جو ہماری میر تقی میر اور ان سب کی تھی وہ ساری ہم نے پڑھی ہے. مجھے اس وقت پتہ نہیں کیوں نام ایک دم سے بھول گیا, وہ ہم کیا لکھتے ہوتے تھے اپنے اردو کے سلیبس میں, ہمارا اتنا سارا کام ہوتا تھا. خیر اب اس وقت مجھے بالکل نہیں یاد آ رہا, لیکن اس چیز کو کافی ٹائم گزر گیا, 20 سال سے اوپر تو ہو گیا ہیں, رائٹ. تو وہ ایک تو وہ کنیکشن ختم ہو گیا. ایک ہمارے اندر یہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ اردو ادب پڑھنا ہے, اردو کتابیں پڑھنی ہیں, وہ شوق نہیں ڈیولپ ہوا تھا. انگلش کا زور تھا, نہ انگلش کے رہے تو نہ اردو کے رہے, بس پتہ نہیں بیچ میں کچھ بن گیا ہمارا. تو میں جب یہ ساری کتابیں پڑھتی ہوں نا, یہ سیلف ہیلپ بکس, یہ بچوں کے بارے میں کتابیں, یہ کوئی بہت بڑے کوئی اسکالرز یا پروفیسرز یا پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں. اور اگر آپ کسی پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر کی بھی, ویسٹرن اسکالر کی کتاب پڑھ کے اٹھاؤ گے نا, تو آپ دیکھو گے کہ ایک ہی پیٹرن ہے, ساری کتابوں کا ایک ہی پیٹرن ہے جو ہماری سننا سے بہت قریب ہے. بلکہ ایکچولی کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے شاید دینیات کی کتاب اٹھائی ہے اور اس میں سے چیزیں لکھ لی ہیں, حدیثیں اٹھائی ہیں اور وہ لکھ لی ہیں. اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین اگر ہم جانیں اور سمجھیں. کیا نا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ کوئی اچھمبا باتیں نہیں ہیں. مجھے 100% پتہ ہے کہ آپ جو مجھے ٹائم دے رہے ہو اور آپ جو یہ باتیں سن رہے ہو وہ صرف ریٹریشن ہے ان چیزوں کی جو آپ آلریڈی جانتے ہو. یہ ان میں سے کتنی کو باتیں ہمارے پاس نہیں تھیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریفلیکشن کویشچنز ہیں یہ میں نے نہ سوچے ہوں پہلے. بندہ جب کسی ٹریک پہ نہیں چل رہا ہوتا اور پھر جب اس کو نیا ٹریک ملتا ہے تو سوچ نہیں آتی ہے نا. تو نیو سوچ ہو سکتی ہے پر نیو کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی بھی اس میں سے کانسیپٹ نیا نہیں ہے, ایٹ لیسٹ مجھے تو نہیں لگتا. یہ ساری باتیں میرے خیال سے ایز مدرز یہ ہم سب جانتی ہیں, بس اپنی اپنی لائف میں یا اپنی انسان ہیں بھول جاتے ہیں, مس گائیڈڈ ہو جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں اپنی ہی کریٹڈ ورلڈ میں. پھر اینڈ میں اگین, in what ways do you daily pace interface with your ability to sit, relax, and be available to the ones you love? What are some of the positive effects of taking time each day to relax or engage in a leisure activity by yourself or with your family member? Is it difficult for loved ones to get and maintain your undivided attention when they talk to you? Name one practice you plan to implement that will allow you to be more available for meaningful conversations. اگر مجھے کوئی ایک میسج آ جائے کہ مجھے کتنے منٹ ہو گئے بولتے ہوئے, میں چیپٹر 6 اگر میں جلدی سے گلاس اوور کر لوں تاکہ پھر ہماری آدھی بک ہو جائے گی, اور ادھر میں پھر اینڈ کرنا چاہوں گی. کین آئی ہیو اے تھمز اپ اور سم تھنگ؟ آئی کین سی اینی تھنگ. بریک بھی لے لیتے, مجھے پانی پینا. بٹ جسٹ ون مور چیپٹر, آئی تھنک وی آر گڈ ٹو گو. I'll just go because my Facebook doesn't show me anything. See life through undistracted eyes. Clarity. اب چیپٹر نمبر 6 کیا ہے؟ کلیئرٹی. اچھا میرے ساتھ ذرا ریپیٹ کریں گے چیپٹرس کے نام. نمبر 1 کیا تھا؟ اویئرنیس. نمبر 2 کیا تھا؟ کنیکٹڈنیس. یس. نمبر 3 ڈیلیبریٹنیس. نمبر 4 پریزنٹنیس. نمبر 5 سیرینٹی. آہستگی, خاموشی, اپنی بھگدڑ کو ختم کرنا. پیسفل انٹینشنلی مومنٹ میں ہونا. ٹھیک ہے نا. آر یو اویلیبل ویٹنگ جوائفلی. اور نمبر 6 جو ہم ابھی کر رہے ہیں وہ ہے کلیئرٹی. ٹھیک. بیٹر دین سلیپ, دا پیپرز ٹو ہارڈ اینڈ اف اٹ اپسیٹس یو. لیٹس ڈو کلیئرٹی.
बेटी स्मिथ का उन्होंने कोट यहाँ पे लिखा है, look at everything as if you're seeing it either for the first or the last time. Then your time on earth will be filled with glory. कुछ लोगों के लिए चलेगा लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि हर इंसान की थोड़ी सी फितरत डिफरेंट होती है, राइट. कोट्स के बारे में एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि क्रिटिकली सोचा करें, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ना सोचें. लेकिन यहाँ पे एकदम से पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आया कि उसने कहा कि बेटी कह रही हैं, यहाँ पे कोई राइटर होंगी, वो कह रही हैं कि हर चीज़ को ऐसे देखो जैसे कि आप उसको पहली दफ़ा देख रहे हो तो फिर तो खुशी होती है, लेकिन अगर आपको ये लगे कि आप इसको आखिरी दफ़ा देख रहे हो तो फिर मेरे ख्याल से हमारा माइंड कहीं और चला जाएगा. इसलिए गौर से देखो और अल्लाह को याद करो, मेरे ख्याल से ये बेटर है. ठीक. Living distracted gave me tunnel vision. I was so focused on what was next, achieving my next goal, meeting my next deadline, reaching the destination, that I missed the beautiful sights and sounds along the way. Everything I did involved a master plan, and I viewed anything that threatened the plan as an annoyance or inconvenience. हम सारे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमें XYZ काम करना है और उस काम में हमें बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग करानी पड़ जाए तो कितनी अनोयंस होती है, या फीडर बनाना पड़ जाए, या बच्चा बुक लेकर आ जाए कि बस मुझे ये बुक अभी पढ़ के दो, या कोई इस तरह का कोई काम, या तो मेरे केस में मैं अगर कोई काम फटाफट भाग के कर रही हूँ और मुझे आवाज़ आ जाए मेरे शौहर की, इरम, ओहो हो, फिर तो इरम की हालत होती है देखने वाली. मैं ये कर रही थी, मुझे क्यों बुलाया. और मज़े की बात है, अक्सर पता है क्यों बुलाया जाता है, ये देखो मैंने ये जोक पढ़ा है बहुत मज़े का, सुन लो. कितनी खूबसूरत बात है कि कोई अपनी हंसी, अपना मज़ा, अपना वक्त जो उसने महसूस किया खूबसूरत, वो मेरे साथ शेयर करना चाहता है, चाहे वो मेरा शौहर है, चाहे वो मेरी औलाद है. लेकिन मैं काम कर रही हूँ, मुझे काम से क्यों रोका, काम के दरमियान मेरे खलल क्यों डाला, काम मैं कर किसके लिए, कर इन्हीं के लिए रही हूँ. तो फिर मैं कौन सा कोई पहाड़ खोद रही हूँ, कौन सा मैं कोई एहसान कर रही हूँ. तो सारी बातों की बात ये, क्लैरिटी रखें, फोकस रखें, पहले रब फिर बाकी सब, और बाकी सब में फिर आपके अहलो अयाल पहले, और फिर उसके बाद मैं और आप, राइट. मैं और आप मैंने इसलिए कहा कि सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ मैं. अगेन उन्होंने अपनी लाइफ की बड़ी अच्छी सी एक स्टोरी सुनाई, एक एग्जाम्पल्स दी. Identify your hands-free enemies. The more steps I took on my journey, the more I realized the simple truth. It is in the times I least want to be hands-free that I most need to be hands-free. I began to take notice of the times when I most rebelled against my being hands-free. A major factor in my willingness to let go and live was whether or not I had enough sleep. Sleep deficiency led me to be impatient and grouchy. जिनके छोटे बेबीज होते हैं ना, जिनको फीड की ज़रूरत होती है, 0 to 6 months 9 months तक ले लो, मैं उनसे तो ये बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल वक्त होता है, बच्चे को सोने की ज़रूरत होती है, उठने की ज़रूरत होती है. बच्चे के साथ सोते हैं और बच्चे के साथ उठते हैं, और जो माएँ बच्चों के साथ सोती हैं और बच्चों के साथ उठती हैं, मेरे ख्याल से वो बेहतर फंक्शन करती हैं निस्बतन उन माओं के जो बच्चों को सुलाने से पहले भी जाग रही होती हैं, बच्चों को सुलाने के बाद भी जाग रही होती हैं. और ये बहुत बड़ा धोखा है. सारे यंग बच्चों की माएँ सुन लें प्लीज़, अगर आपके बेबीज़ हैं छोटे और आपको ये लगता है कि जब बेबी सो जाता है या टॉडलर सो जाता है तो उसके बाद आपको आपका मी टाइम चाहिए, तो आई 100% टेल यू that me time is going to become, I'm going to yell on my child time for the rest of the day because you did not sleep. So get your sleep. Every human beings need sleep. ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे ऊपर कि हम सोते हैं ताकि हम बेटर फंक्शन कर चुके हैं. प्लीज़ खुदारा अपने आप को मी टाइम में बर्बाद और गारत मत करें, क्योंकि वो सारा जो ग्राउचीनेस है, वो सारा उस मासूम नन्ही सी जान जिसको समझ भी नहीं है, हम फिर उस पर निकालना शुरू कर देते हैं. मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने किया और मैंने बड़ा रिग्रेट किया, और मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला forgive us on our mistakes and make us better people. आमीन. तो वो ये कह रही हैं कि once I figured this out, I immediately stopped staying up late
or write or do research on my computer. یہ تو بڑی اچھی خاتون ہے, یہ تو سوشل میڈیا پہ بھی نہیں تھی. اچھا, I arranged my schedule so I could get at least 7 to 8 hours of sleep a night. Within a week, my mood improved greatly. I was more patient, loving, and calm. With a good night's sleep, being hands-free came more naturally to me. Identify the times in your life when you just rebel against your going hands-free. Attempt to find out ways that you can reduce it. ٹھیک ہے. Take 10 minutes to show and tell. Again, same thing. Create moments that matter list. Whenever I found myself getting upset over life's little annoyances, I thought about those who are truly suffering, those who could only wish their problems were as insignificant as mine. Offering myself with the awareness quickly put out my minor problems into perspective. کیا سکھا رہی ہیں یہ؟ سکھا رہی ہیں کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر شکر کرنا سیکھو. کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو ہم جانتے ہیں نا, بس انگلش میں لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. کتنی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ زندگی میں ہر چیز انوائے کر سکتی ہے اگر ہم اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیں. ہر رشتہ انوائے کر سکتا ہے اگر ہم اس کا شکر نہ, اگر ہم اس کی امپورٹنس کو نہ سمجھیں, اس کو نبھانا نہ آتا ہو, ہمارے ٹولز نہ پتہ ہوں, اور ہم نیگیٹیوٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. پھر وہ کہتی ہیں purchase a small book and take a start and write it down. Moments that matter list. Keep the notebook handy in your purse or briefcase or on your bedside or in your drawer. By making a hands-free the practice of your life, you have the undoubtedly already gained uncountable moments that would have been missed had you continued with that distractive life. ٹھیک ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری کا جرنل رکھو. ویسے جرنلنگ میں دیکھتی ہوں, اگر آپ کو انگزائٹی ہے تو وہ کہتے ہیں جرنل رکھو, اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو وہ کہتے ہیں جرنل رکھو, اگر آپ خوش ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ جرنل رکھو, اگر آپ زندگی میں کوئی چینج لے کر آنا چاہتے ہیں, چاہے وہ آپ کی ڈائٹ کا ہی چینج ہے, ایون ڈائٹیشنز کہتے ہیں کہ لکھو 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 لکھو. میرا خیال ہے کہ جب ہم چھوٹے بچوں کو, یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی پہلی دفعہ ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ میں ابھی سوچ رہی ہوں, مجھے یہ جو ہم اپنے بچوں کو 2 یا 3 سال کی عمر, یہ جو گروپس میں مائیں لکھتی ہیں مجھے ٹریسنگ شیٹس دے دیں اور مجھے یہ دے دیں, وہ ضروری ہے. میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہی ہوں, میں نے مطلب کہ وہ ایک امپورٹنٹ ہے, رائٹنگ ایک اسکل ہے. لیکن اگر ہمارے بچے جب لکھنا شروع کر دیں, ہم اور ہمارے بچے اگر 5 منٹ روز نکال لیں جرنلنگ کرنے کے لیے, جہاں پہ میں اپنے جرنل میں کچھ لکھ رہی ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں, یا مجھے یہ سارے میرے کام کرنے والے ہیں, یا میرے لیے میرے بچے اتنے امپورٹنٹ ہیں, یا میرا رب کتنا امپورٹنٹ ہے, یا میں اپنے رب سے کوئی بات کر رہی ہوں اور میرے بچے مجھے دیکھیں یہ کرتے ہیں اور میرے بچے اپنے جرنل میں چیزیں لکھیں. اچھا, میں نے میرے خیال سے وہ پارٹس ریڈ نہیں کیے. انہوں نے بیسکلی پتہ کیا کیا تھا, انہوں نے اپنی بچیوں کو جرنل دیے تھے اور ان کی بچیوں نے اس کے اندر چیزیں لکھی تھیں, اپنی ماں کو لیٹرز لکھے ہوئے تھے. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ از, جب ہم اپنے بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں نا, تو بجائے ہم ان کو unnecessary ٹاپکس دیں لکھنے کے لیے, اگر ہم انہیں ان کی دل کی بات لکھنا سکھا دیں تو میرے خیال سے 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو وہ اپنے آپ سے ذرا زیادہ کنیکٹڈ رہیں گے, اور دوسرا آپ بھی جان سکیں گے کہ مطلب کہ بچہ کیا سوچتا ہے, کس طرح سے سوچتا ہے. لیکن ان کو میرے اپنی ذات سے کنیکٹڈ رہنا ہوگا اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا بہتر آئے گا. اور بہت ساری چیزیں ہم کہہ نہیں پاتے, شاید ہم لکھ پائیں اور اچھے طریقے سے لکھ پائیں, اور شاید ہمارے بہت سارے مشکلیں ہماری جو سوچیں ہیں وہ آسان ہو جائیں. آخر کی بات, ٹھیک ہے, آخر کی بات کرتے ہیں. کلیئرٹی کا مطلب ہے نوٹس دا گڈ, یعنی کہ جو آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ان پر غور کریں. To see the high marks on the report card before I see the low ones. یہ اگین میں نے آپ کو بتایا ہر چیپٹر کے اینڈ میں چھوٹی سی پوم لکھتی ہیں, یہ والی اچھی ہے اس لیے میں یہ پڑھ رہی ہوں, اس کے بعد میں ریفلیکشن کوسچنز کروں گی, اور اس کے بعد we are done. Clarity, notice the good. To see the high marks on the report card before I see the low ones. To see her beautiful swimming form before I notice the place she comes in. To see she dressed herself before I notice the winter boots and tank top combination. To see she made her own breakfast before I notice the cereal scattered against the counter. To see the artistic flair in her creation before I notice the mess. To see her love for music before I notice the out of tune notes. To see
the effort and the attempt before I see the mistakes and shortcomings, to see the beauty and goodness before I see the flaws and imperfections, to see the opportunities before I notice the inconveniences, to see the promises of each day before I notice the challenges. This is how I want to live, to notice the good, always the good, before anything else and above all else. Good. अच्छे पे गौर करें, नेगेटिविटी को अपनी लैंग्वेज से निकालें, बोलने से पहले सोचें, ज़रूरी है. पहले बुराई को, पहले किसी गलत काम को नोटिस कराना, फिर बाद में कहना नहीं नहीं अच्छा भी बहुत है, अच्छा भी बहुत है. ये जो नहीं नहीं अच्छा भी बहुत है, यहाँ से हम क्यों नहीं शुरू करते, कितना अच्छा है. और फिर उसके बाद फिर मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत रहती है बताने की कि गलत क्या है, और जिस थोड़ी बहुत ही मार्जिन रखना चाहिए इग्नोर करने का. Reflection questions. It is in the times I least want to be hands-free, the most I need to... अच्छा खैर ये नहीं. हाँ, उन्होंने basically ये लिखा है. ये बात लिखो कि कौन से टाइम्स ऐसे हैं जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपके हाथ फ़ोन से या किसी डिस्ट्रैक्शन से खाली हों. वो कौन से मोमेंट्स हैं? Are there tasks within your children's daily routine, such as bedtime, homework, meal preparation, or carpool, that you currently view as an inconvenience that might actually be the opportunity to connect? How might you change your perspective to see the hidden gifts in the midst of the monotony of trying times? When you find yourself becoming agitated over minor inconveniences or trivial annoyances, what might you think about or say to yourself to keep things in proper perspectives? I think we all know the answer of this. Lekin, it's always good to reflect. Jazakallahu khair. Thank you so much for your time. Alhamdulillah, we come to our end of 6 chapters. It's basically 12 chapters. The next 6 will be in the next live, inshallah. And let's see, maybe we can do a live sooner. Take care. Assalamu alaikum.